Hey, what is up everyone? This is Geet and welcome to my channel. So today we are going to talk about a new 360 camera which is about to come in 2021 और वो है GoPro Max 2। तो सबसे पहले जब ये वीडियोग्राफी का सिलसिला शुरू हुआ तब आते थे DSLRs, द hefty cameras like Canon 1DX Mark II, वो बड़े बड़े कैमरास जो मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वीडियोस लेते थे। एंड देन केम दी मिररलेस कैमरास जो स्मॉलर साइज में सेम क्वालिटी वीडियो डिलीवर करते हैं। बट उसी दौरान एक और कॉम्पिटिटर आ रहा था रास्ते में एंड इट वाज एक्शन कैमरास। तो GoPro was one of the biggest manufacturer of action camera, and right from the GoPro Hero to GoPro Hero 7 and the newest iteration GoPro Hero 8 and 9, they were really good quality and they were basically this funda of focusing everything whatever comes inside the frame. तो जो भी कुछ है सब फोकस में डाल दो। दे कॉल इट इनफाइनाइट फोकस। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इफ़ यू वांट टू डू दी एक्शन स्पोर्ट वीडियोग्राफी। तो अगर आप मस्त बाइक चला रहे हैं जंगलों में और इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड इट देन you can mount a GoPro right onto your helmet or onto the handle of your bike and that's it. You have to hit the record button और बाकी का सब GoPro कर लेगा। They have this insane level of stabilization और GoPro Hero 9 में मतलब they have pushed the limit with the horizon leveling. So उसी दौरान एक और चीज़, एक और टाइप का कैमरा जो मार्केट में आया था which was launched by GoPro, it was in 2019 और ये कैमरा था GoPro Max. So this was a 360 camera. So basically what a 360 camera is, it has two 180 degree camera front and back. तो वो रिकॉर्ड करता है whatever is around the camera. तो ये एक अच्छी चीज़ है for creative videographers where everything gets recorded in just a single frame and in the post processing you can do the rest. You can just reframe it and you can actually show to the people what you want to show. तो बहुत ही अच्छे फीचर्स थे बट आई फील देर आर सो मैनी थिंग्स विच वे आर मिसिंग इन GoPro Hero Max. तो अभी जो 2021 में आने वाला है Max 2, सो लेट अस सी व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द अपकमिंग GoPro Max. और अगर ये चीज़ें GoPro Max में आ गई देन इट वुड बी द बेस्ट 360 डिग्री कैमरा एवर. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम let us discuss about what are the expected features from Hero Max 2. तो भाई सबसे पहला फीचर ऑफ एनी कैमरा इज़ द रेजोल्यूशन. और आजकल तो भाई फैशन है 4K रेजोल्यूशन की. बट इन GoPro Hero Max the resolution which was supported was 5K on the paper. But if you shoot it in a hero mode which is just a run and gun mode just like GoPro Hero 9, तो भाई उसमें यार बहुत ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था. सो यू हैव टू रिकॉर्ड एट 1440p और 1080p which is quite less because of the small sensor size of GoPro. तो भाई नेक्स्ट जो भी GoPro आने वाला है सो वी वांट 8K रेजोल्यूशन फॉर 360 डिग्री एंड एटलीस्ट 4K और 5.3K resolution for the hero mode because you won't be using the 360 mode all the time because आपको there are so many steps that you have to follow if you want to use the 360 mode. So in the post processing you have to reframe it and export it and again you have to use that exported video into your editing. तो बहुत सारा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें and that is the reason why we want a better resolution, at least 4K. GoPro, please. The second thing and which has been a problem right from the beginning of a GoPro and till now is low light performance. तो भाई जब लाइट कम होती है and you want to shoot something in your GoPro, भाई it's really horrible. I mean the footage sometimes is not even usable. तो low light performance should be enhanced in the new GoPro. और भाई थोड़ा सा बड़ा सा सेंसर ले लो या फिर कुछ अंदर ऐसा प्रोसेसर में ही इमेज प्रोसेसिंग करो कि it becomes better. So many times we want to record in low light like this situation when you are in a room and you feel like you are getting a good camera angle, but whenever you see the video and you see everywhere is noise. तो भाई ये एक चीज़ है which needs a lot of enhancement and GoPro Hero Max में तो बहुत enhance हुआ है low light performance, but we need it to be much better in the upcoming GoPro.
So the third most important thing is external audio. So in the current GoPro Max, the audio results are really good. और कुछ 6 माइक्स का कुछ एरे बना के इन लोगों ने मस्त कुछ किया है कि मैक्सिमम नॉइस रिडक्शन और मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके, बट स्टिल इट मिसेस दैट प्रोफेशनल फील ऑफ दैट ऑडियो, राइट? तो भाई जिन जिन लोगों को मतलब एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना हो, लाइक रोड वायरलेस गो और इवन द रोड वीडियो माइक्रो, और आजकल तो बहुत ही एक माइक बहुत ही फेमस हो रहा है, दैट इज़ रोड वीडियो माइक NTG. सो इट गिव्स द शॉर्ट गन लाइक परफॉर्मेंस इन अ स्मॉल हैंड हेल्ड कैमरा माइक. तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हैं दैट नीड्स टू समटाइम्स यू यूज़ इट फॉर जस्ट व्लॉगिंग, एंड इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू मे नीड टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल माइक्रोफोन इनटू योर कैमरा. और ये इन्हांसमेंट बहुत ही ज़रूरी है, एंड वी एक्सपेक्ट दैट इन 2021 हीरो मैक्स वी आर गेटिंग दिस. तो भाई नंबर 4 पे आता है दी एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन. तो एवरी 360 कैमरा गिव्स एन एप्लीकेशन फॉर एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग. तो उसमें आपको मतलब रीफ्रेम करना होता है आपका पिक्चर एंड यू हैव टू एक्सपोर्ट इट. बट द बिगेस्ट कंपिटिटर ऑफ GoPro Max is Insta360 1X, और उसकी एप्लीकेशन बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें उसमें डाली है. अ लॉट ऑफ फिल्टर्स, अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स दैट यू हैव, अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ जो हीरो मैक्स में नहीं है. यू कैन जस्ट रीफ्रेम एंड डू some other keyframing stuff and not even that much involvement of AI जो कि 1X2 में है. So yes, we want the GoPro to learn from Insta360 1X2 and learn all those optimizations that they have made in their application and enhance and use them in your application as well. तो अगर ये फीचर आ गया तो मतलब Instagram में धमाका बुला देगा ये. Just kidding. What am I saying? Or the last one, or one of the important thing of any action camera or 360 camera is the size. तो भी एक्शन कैमरे जितने भी छोटे हो उतना ही अच्छा है. So the same thing we want in 360 cameras and this GoPro Max 2. तो भाई साइज़ थोड़ी छोटी कर दो. GoPro Hero 9 is a little bit bigger than GoPro Hero 8 because of the bigger battery size. तो अगर आप बैटरी साइज बढ़ा रहे हो then the size is okay. But if you have no plans to increase the battery size, then please reduce the size of this camera because it's already too big. तो ये थे हमारे 5 enhancements which are required in the new GoPro Max 2. और अगर ये 5 enhancement आ गए तो यार it would be, it will replace all the DSLRs and mirrorless camera. Not all, but many of the DSLRs because of the improved image quality and stabilization. तो ये था आज का ज्ञान. और like it if you like the video, and comment and give me your suggestions and share it if you found it useful or it helped it to you in any way. This is Keith and thank you for watching my video.